Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, just little introduction. okay. Yeah, so हम लोगों का सौभाग्य we like to welcome His Holiness Bhakti Vasudeva Swami Maharaj. So you know about Maharaj. Maharaj is serving Srila Prabhupada for the last 50 years, and No, Maharaj has 40 years, not 40 50. 40 years plus 40 years plus. Maharaj got initiated in 1986, more than 40 years, and Maharaj has done his PhD from Walden University in USA. Maharaj is a very highly learned scholar, and hardly anyone among us has reached that level or will be reaching that level. It's not so easy, but Maharaj is a scholar also. At the same time, he's a pure devotee, pure Vaishnava. So we are very fortunate. And Maharaj has written many publications. He has authored over 35 publications, journals, that thing. So, and that is highly appreciated all over the world. So recently Maharaj gave one publication in London also a few years back, so that was highly appreciated. तो महाराज हम लोगों को संग दे रहे हैं एंड वी आर फॉर्चुनेट टू हैव दिस एसोसिएशन. तो महाराज को हम फिर से वेलकम करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama राम राम हरे हरे. महाराज वी प्रेफर simultaneously Hindi translation if okay with you. That's some of the students who don't understand English. Much they understand, but the accent, American accent, they don't. Okay, no problem. That was Hindi, then everyone can understand. Okay. Prabhuji is He said, what is the topic you want me to discuss with them? Futility of this material world. Why you have to be negative? I don't like discussing negativities, All right, so instead of saying the futility of this material world, a person coming for the first time, you start telling him, giving him philosophy of futility of this material world. Come on, they will not be interested in your movement, okay? This is what they know, and you are condemning it. So you can add something to what they have, and then they will appreciate. Yeah, preaching, there are different approaches to preaching. The idea of preaching is to be able to add values to people's life. But if you attack what they are doing, you're not going to create good relationships. Because I can give you an example. I have a boy in New Jersey in America. Okay. सामने बोलेंगे बाद में नहीं आता. You can translate. You want to translate? Translate. I can going forward. I can. All right. So I have a young boy, 17 years old boy in New Jersey, who is highly interested in me. He saw me for the first time. He became captured. He became enamored. So, but then I saw that he was very much attracted to me. So I just told him up front that, see, if you don't have a degree, I will not initiate you. महाराज न्यू जर्सी में थे तो एक यंग लड़का महाराज से अट्रैक्ट हुआ तो महाराज ने उसको कहा कि तुम अगर डिग्री नहीं लोगे तो मैं तुम्हें नहीं सुनेगी. So he asked me, so what if the person is in college? You still not initiate the person? So I said, well, wait, when he graduates, then we'll initiate him. He asked me, so what if he's in college? Can I still not initiate him? I said, no, we will wait. When you graduate, then we'll initiate you. So, why I'm bringing up this is that recently, his father was complaining that he's not chanting. उनके पिताजी कंप्लेन कर रहे थे कि ये माला नहीं कर रहा है, इसलिए महाराज ये टॉपिक लेके आ रहे हैं. So, I asked him why he's not chanting. महाराज ने पूछा ये माला क्यों नहीं करता है. He said the problem is that he gets pissed off with the parents. He's the only child. So, पिताजी ने कहा कि ये एकलौता बच्चा है तो अपने माता पिता से गुस्सा हो जाता है. the parents tend to be too over-controlling, all in the name of devotional service. Sometimes माता पिता भक्ति के नाम पे बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन जाते हैं. So the young people, they don't like over-control. और जो यंग लड़के हैं उनको ये पसंद नहीं आता है.
ओवर कंट्रोल. So he said, when they come to push on him, have you chanted? Have you chanted? So the first instinct is to resist, to just say, no, I have not chanted. Do your worst. तो जब उनके पिताजी बार बार पूछते हैं कि तुमने माला करी या नहीं करी, तो वो चिढ़ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं करी मैंने माला. So, तुम अपना काम करो. so here, this I'm talking about just looking at negativities, that instead of approaching the boy in that way, we could just be polite and not show him that I am the boss. I'm the parent, I'm the boss, so just you have to follow my instruction. He said, if he chants now, according to the boy, he said, if he chants, it's as if he chanted his parents' name. So he's chanting because of his parents, and he wants to chant because of Krishna, not because of his parents. तो महाराज कह रहे हैं कि वास्तव में वो अपने पेरेंट्स के लिए चैंटिंग नहीं करना चाहिए, वो करेगा तो ठाकुर जी के लिए, भगवान के लिए चैंटिंग करेगा. So the idea is that when we are preaching to people, we have to look at what to add to their life. हम जब प्रचार कर रहे हैं तो हमको देखना चाहिए कि हम उनके जीवन में क्या ऐड कर सकते हैं, क्या वैल्यू दे सकते हैं. Not to look at what they are not doing correctly. ये नहीं कि वो क्या सही नहीं कर रहे हैं. Because that means that we are attacking them. That means we are attacking them. We are fighting इसका them. मतलब उनको ऐसा लगेगा कि हम उन्हें अटैक कर रहे हैं. And therefore, we have to see how we are encouraging people who come close to us to take to Krishna consciousness, especially the students. They have to understand that you have to create good relationship with your fellow students and not point accusing fingers to them. Oh, you are kami, you're nonsense, you're eating meat, you're worshipping demigods. And जो प्रचारक है उनको दोष नहीं ढूंढने चाहिए लड़कों में और जिनको प्रचार कर रहे हैं कि तुम मांस खा रहे हो, धर्मी हो, मंदिर नहीं आते या, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए. Yeah, because right here in India, even in the colleges, the average Indian student has been exposed to the Hindu culture. Whether they are Muslims or they are Christian, they were brought up in Hindu culture before they change, the parents change or whatever. तो भारत में जितने भी हैं, चाहे मुस्लिम हो या लड़के जो पढ़ रहे हैं, सबको हिंदू कल्चर से सारे एक्सपोज्ड हैं, सबको हिंदू कल्चर के बारे में पता है. And therefore, if we want to encourage people to take to Krishna consciousness, we don't look at the fault in what they are doing. We can appreciate what they are doing, and we add something to what they are doing that will add value to their life. तो हम जब प्रचार कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो क्या नहीं कर रहे हैं, हमें उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने का प्रयास करना चाहिए, उनको जीवन को अच्छा देने का प्रयास करना चाहिए. So you are all young people. Some of you may become top church, top leaders in India, and the important thing for you right now is to see how you're building up your devotional values. आप अभी सब यंग हैं और आगे चल के आप भी लीडर्स बनेंगे समाज में, तो आपको ऐसा प्रयास करना चाहिए कि आप अपने जीवन में क्या अच्छा डाल सको. Why do you need to build up your devotional values? It is because a number of people who have attained success in life, they lack a devotional values, or they become devotionally bankrupt and they go down the value, they fall down. तो हमें भक्ति क्यों बढ़ानी चाहिए, भक्ति के संस्कार क्यों लाने चाहिए? क्योंकि महाराज कह रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल है कि जो बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन क्योंकि उनमें भक्ति की वैल्यूज नहीं है तो वो धीरे धीरे गिरते जाते हैं. It might be not something you observe in India, but in America, it's very dominant. You can even in Europe, in UK for instance, you can be even the prince to the queen, or the prince. You can be, your monarch could be the queen of England, and you get into immoral activity, and you are stripped off of all your rights. It happened with Queen Elizabeth II. What he did to Prince Andrew. Andrew was involved. Andrew was he served in the army, a top-ranking guy, and he was highly recognized all over the world. But because he got involved in an immoral activity, when he came to the public, the queen
immediately strip him of all his rights. All the work he has done for the whole life was reduced to zero. तो महाराज कह रहे हैं कि भारत में तो इतना देखने नहीं मिलता, लेकिन पाश्चात्य देश में देखने मिलता है. तो महाराज एग्जांपल दे रहे हैं कि क्वीन एलिजाबेथ II के बेटे थे प्रिंस एंड्रयू. तो उन्होंने बहुत सेवा करी, आर्मी में भी सेवा करी, देश की कई कुछ सेवा करी, लेकिन वो कुछ इमोरल एक्टिविटीज़ में, कुछ उनके चरित्र के विरुद्ध उन्होंने कुछ कार्य किए. तो उनकी जो माता थी, जैसे पता चला, इमीडिएटली उन्होंने उनको जितने भी रॉयल जो भी उनके राइट्स थे वो सारे राइट्स हटा दिए और उनको बस फिर निकाल दिया रॉयल समाज से. Another case is former President Donald Trump. Recently, a New York jury found him liable for sexually assaulting a lady, and he was asked to pay damages to the sum of $5 million. तो अमेरिका में ट्रम्प के ऊपर एक केस हुआ जिसमें ये पता चला कि उसने सेक्सुअली असॉल्ट किया है किसी महिला को, तो उसमें उसको दंड के रूप में $5 मिलियन भुगतान करना पड़ा. So going to school is a good thing, but if you don't have devotional values, your life becomes like a drop of water on a leaf. You know, a drop of water on a leaf? You could fall down, you could fall drop of any time and sink into the earth. तो आप जब हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस में जा रहे हैं, तो आपकी जो जीवन है वो एक कमल के पत्ते के ऊपर एक बूंद के समान है, वो किसी भी समय गिर सकता है. तो बड़ा सावधान रहें. So these observations, this public scrutiny of devotional or moral values is not so rampant in developing countries. But you see, the developing countries, they look up to the advanced countries and they copy these things. Therefore, even in your own country, where people don't scrutinize so much about on the public leaders, in the future they will start adopting these rules from the West and scrutinizing leaders. So any little thing you do is magnified, is blown up, and it becomes a scandal, and you may lose your credibility, you may lose your job, you may even go to jail. तो भारत में और भी डेवलपिंग कंट्रीज में अभी इतनी स्क्रूटिनी नहीं है कि अगर जो लीडर है उसके चरित्र में या कोई दोष है तो हम इतना स्क्रूटिनाइजिंगली नहीं देखते, लेकिन पाश्चात्य देशों में ऐसा हो रहा है कि अगर आप लीडर हैं और आप में कोई दोष है, कोई चरित्र में और भी किसी का करप्शन है, तो वो हाईलाइट होता है तुरंत और उनकी पोजीशन से हाथ धोना पड़ता है और फाइन भी लगता है. तो भारत में भी ऐसा हो नहीं रहा, पर धीरे धीरे हम फॉलो कर रहे हैं वेस्ट को, तो ये हमारे पास भी आ जाएगा. In the Western countries, you don't have a culture of restraint or a culture of devotional values being institutionalized. And also, that is affecting the whole world, because even right here in India, where we have the birthplace of the Puranas, where we have the Vedas, the original Vedas were spoken here in the land of Bharata by Srila Vasudeva himself. But, because we are pursuing the Western values, people in India are gradually becoming disinterested even in what could help to save the whole world from chaos. What was the last one? What could help, the Vedic culture could help to save the world from all problems. तो पाश्चात्य देश में खासकर जैसे अमेरिका में, वहाँ पे धर्म का इतना विचार नहीं है, लेकिन हम क्योंकि विदेशों को फॉलो कर रहे हैं, पाश्चात्य जगत को फॉलो कर रहे हैं, तो हम उनको फॉलो करने के चक्कर में अपने जितने वेदों हैं, वेद हैं और जितने भी हमारे धर्म हैं और रिलीजन है, उसको हम फॉलो करना बंद कर रहे हैं. तो इससे डेंजर ये है कि क्योंकि हमारा धर्म पूरे संसार को बचा सकता है, हम उसी धर्म को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो आगे चल के पूरे समाज को, पूरे विश्व को इसका भुगतान करना पड़ता है. So the point is, education is very good, but education without devotional foundation could make you to be very miserable. तो महाराज कह रहे हैं कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर एजुकेशन में डिवोशनल फाउंडेशन नहीं है, भक्ति या कोई धर्म से नहीं जुड़े हैं, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाएगी आगे. Because then you could get involved into activities
that will lead to losing your credibility, losing your job, even being in prison. तो अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम ऐसे आदतों में फंस सकते हैं कि हमारी जॉब जा सकती है, हमारे समाज में हमारी निंदा हो सकती है और हम जेल भी जा सकते हैं. And so it is important for our devotees, young devotees, to understand that they need to be spiritually astute. They need to add devotional values in their life to mold their lives for their future development. तो जितने भी यंग भक्त हैं, युवा भक्त हैं, उनको चाहिए कि वो अपने आप को भक्ति में सुदृढ़ बनाएं और अपने चरित्र का निर्माण करें, क्योंकि आगे चल के वही उनको हेल्प करेगा. Because see, I know even some of my friends, they have 3 PhDs, but they're not happy, you know. महाराज कह रहे कि महाराज जानते हैं उनके कई मित्र हैं, उनके पास 3 PhD है, लेकिन वो फिर भी प्रसन्न, हैप्पी नहीं है. Because they are devotionally bankrupt. क्योंकि उनमें कोई भक्ति नहीं है. And Krishna is characterized by Satchit Ananda. And the Jiva is also characterized by Satchit Ananda at a micro level. भगवान सच्चिदानंद है और जीवात्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन एक बहुत छोटे स्वरूप में. So the 2 things are there. One is characterized by Satchit Ananda at a micro level. The other is characterized by Satchit Ananda at a macro level. तो भगवान जो है वो बड़े स्तर पे सच्चिदानंद है और जो जीवात्मा है वो छोटे स्तर पे सच्चिदानंद है. And therefore, if we want to be happy, we want a blissful life, we have to align our activities with the ocean of bliss, which is Krishna consciousness. तो अगर हम संसार में सुखी रहना चाहते हैं तो आनंद का समुद्र जो भगवान की भक्ति, उसमें हमको लगना चाहिए. And you see, sometimes people say they don't have the time to chant. कई बार लोग कहते हैं कि हमारे पास जप करने का समय नहीं है. They're too busy with studies or they're too busy with work, so they don't have the time to या chant. तो वो बहुत पढ़ाई कर रहे हैं उसमें बिजी हैं, या अपने काम धंधे में बिजी हैं, तो उनके पास जप करने का समय नहीं है. And this is self-deception. और ये अपने आप को ही ठगने वाली बात है. Why is it self-deception? Why is it self-deception? हम अपने आप को ही ठग क्यों रहे हैं? क्या क्यों ऐसी बात? Because as a student, you want high grades, na? You want high grades. स्टूडेंट तो आपको क्या चाहिए? ज़्यादा नंबर चाहिए, ज़्यादा मार्क्स चाहिए. Is there any of you here who doesn't want high grades? अब में से कौन ज़्यादा नंबर नहीं चाहिए? But listen. You know, because of ignorance, ignorance of the scientific properties of chanting, we say we don't have the time to chant. तो हरे कृष्ण महामंत्र के जप का जो वैज्ञानिक सिद्धांत है वो नहीं जाने के कारण हम ऐसा कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है जप करने का. Now, we know the purpose of this chanting is Krishna prema pumatuma, to attain pure love for Krishna. इस जप का वास्तविक जो लाभ है वो है कि हमें भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए. And just like every intervention, every allopathic intervention, for instance, you're going for chemotherapy, for some cancer therapy, it has side effects. तो जब हम एलोपैथिक मेडिसिन लेते हैं तो कुछ साइड इफेक्ट होते हैं उसके. Spiritual medicines also, they have side effects. तो जो आध्यात्मिक औषधि है उसमें भी क्या होता है? साइड इफेक्ट. But the side effects are very good. पर साइड इफेक्ट बहुत अच्छे हैं. So here, the purpose of the chanting is to attain pure love for Krishna. But I can give you some examples of the side effects, which are very good. तो जप का वास्तविक जो लाभ है वो है भगवान के चरणों में प्रेम, लेकिन इसके बहुत अच्छे साइड इफेक्ट जो महाराज बताएंगे. One is that, okay, for instance, for the students, there are research reports how the chanting improves your cognitive skills. महाराज कह रहे हैं कि रिसर्च हुआ है जिसमें ये बता रहे हैं कि अगर आप जप करते हो तो आपके जो कॉग्निटिव स्किल्स है, मतलब कि आपका परसेप्शन और चीज़ों को ग्रास्प करने की जो शक्ति है वो बढ़ जाती है. In what way? The chanting helps to improve your attention span और जप करने से आपका जो अटेंशन स्पैन है वो भी बढ़ता है. and your memory. और हमारी मेमोरी भी.
So this is not preaching stuff. I'm talking science, okay? महाराज ये धर्म का प्रचार नहीं करे, महाराज साइंस की चर्चा कर रहे हैं. And it's not that, okay, the chanting is okay, it's good for one devotee and it's not good for the other one. No. For anybody who chants, whether you're a devotee or not a devotee, anybody who chants, you get these side effects. As simple as anything. आप चाहे भक्त हो या ना हो, लेकिन आप ये जब करेंगे तो साइड इफेक्ट आपको मिलेंगे अच्छे. But if you don't know, you will say, I don't have the time to chant because I'm too busy. What is that? लेकिन आप ये जानते नहीं हो कि क्या अच्छे साइड इफेक्ट है, तो आप बोलो कि समय नहीं है जब करने का. Something that will improve your grades and your memory, and then you say you don't have the time to do it, and you say you're a student. What is that? Student life. आज कह रहे हैं कि हम स्टूडेंट हैं, हम और इससे हमें अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, फिर भी हम कहते हैं समय नहीं है हमारे पास करने का. So, cognitive importance of chanting have been demonstrated by researchers. And so, see, the problem is that sometimes we have this stuff, Srila Vasudeva has given us everything. But in most cases, we don't know how to package this stuff and give it to the people, give it to the consumers based on their needs. Or in most cases, all that we know is Krishna's true Bhagavan Swayam. So I tell you, if you say Krishna's true Bhagavan Swayam to me, I say, I don't believe in Krishna. I have my own religion. How are you going to deal with me? तो कई बार भक्त प्रचार करते हैं तो भक्त सीधा बोल देते हैं कि ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए, और पूछे तो क्यों करें, हम तो कहते हैं कि भगवान जो है कृष्ण स्वयं भगवान है. तो सामने वाला व्यक्ति कहता है मैं तो मानता ही नहीं श्री कृष्ण को. तो वहीं पे प्रचार फेल हो गया. So, see, your education is going to help you to create a viable future for spreading the glories of the holy name if you take these teachings from the scientific perspective. You'll be able to share those scientific values with anyone, even the people who claim to be atheists. They will want to hear what you say. आज कह रहे हैं कि जो पढ़ लिख रहे हैं तो वो अपनी जो एजुकेशन है उसको यूज कर सकते हो साइंटिफिक तरीके से प्रचार करने में, ताकि जो लोग कहते हैं कि हम धर्म को ही नहीं मानते, हम नास्तिक हैं, तो उनको भी आप साइंटिफिकली जो है हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बारे में आप समझा सको, ताकि वो जप कर सकें. But if you don't have the proper association with devotees who have those type of scientific mindset, who are doing those type of works, who can enlighten you about these things to be for you to use as tools for enlightening others, to bring them close to Krishna consciousness without imposing rules and regulations on them, then how are you going to be exposed to these very wonderful adventures in Krishna consciousness? It becomes very impractical. तो आज कहते हैं जब तक आप ऐसे भक्तों का संग नहीं करोगे जिनके पास ये स्पेशल टेक्निक्स है साइंटिफिक कि कैसे प्रचार कर सकते हैं बिना धर्म को बीच में लाए, कैसे हम कृष्ण भक्ति का प्रचार कर सकते हैं साइंटिफिक तरीके से, तो अगर आप ऐसे भक्तों का संग नहीं करोगे तो आप कैसे आगे चल के इस तरह से प्रचार कर पाओगे, नहीं कर पाओगे. So research, this was by some Indian scholars. I think two or three of them are from IIT Kharagpur. I need to meet those scholars. But then one of my friends in New Jersey, in the US, he just showed me a recent publication last year on how the chanting of the Hare Krishna Mahamantra helps to mitigate insomnia. महाराज कह रहे हैं कि कुछ रिसर्च की गई है जिसमें आईआईटी खड़गपुर के भी 2 लोग हैं, और न्यू जर्सी में महाराज के एक फ्रेंड ने भी उस रिसर्च के बारे में बताया कि उसमें लिखा है कि कैसे हरे कृष्ण महामंत्र के जप करने से जो नींद की बीमारी है वो सॉल्व हो जाती है. Because see, this is a big thing, especially among students. When you are engaged in academia, sometimes you overwork yourself and then it could result to insomnia, not being able to sleep. So, Maharaj, can you repeat one more time, sir? This is something very relevant to academics, people who are studying. We may be engaged in studies, especially those who don't read, they wait until the exam period before they read. Then they overuse their brain, and then some of them, they have this problem of insomnia, not being able to sleep. तो कई बार जो बहुत ज़्यादा पढ़ाई में डीप जाते हैं और बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है दिमाग ज़्यादा लगाने से, सोना नींद नहीं आती उनको, इंसोम्निया हो जाता है. Research findings on the Mahamantra shows that the Mahamantra helps you to have a better sleep.
रिसर्च से ये पता चल रहा है, साइंटिफिक रिसर्च से, कि महामंत्रा से आपको अच्छी नींद आएगी. You don't need to go and buy sleeping pills. आपको नींद की गोली Because it helps with your help to improve the functionality of your neurotransmitters. So yeah, it is not surprising that it helps to mitigate insomnia. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, उनकी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव करता है, तो इसलिए कोई आश्चर्य नहीं है कि आपकी इंसोम्निया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए. And then, apart from insomnia, the chanting also has been proven to be an antidote to stress, anxiety, and depression. तो स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का भी इलाज है हरे कृष्ण महामंत्र. So here we find that this spiritual cultivation, sadhana, helps in improving our mental health, helps us to become better learners, better educators, and improve the values of our educational nomenclatures. And not only that, but it also helps to prevent us from getting involved in crimes. तो हरे कृष्ण महामंत्र के जब से हम देख रहे हैं कि हमारे जो प्रॉब्लम्स है, नींद की, स्ट्रेस इत्यादि भी सॉल्व होती है, हमारी पढ़ाई में भी ज़्यादा मन लगता है, और Crime. हाँ, और हम क्रिमिनल्स भी नहीं बनेंगे क्योंकि हमारे चरित्र का निर्माण होगा. On June 28, 2021, I presented my research at the Royal Academy of Science, Engineering and Technology in London, and the research was on how chanting prevents financial fraud. तो महाराज ने 2021 में एक प्रवचन दिया, एक प्रेजेंटेशन दी, और महाराज ने उसमें बताया कि कैसे जप करने से जो है फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होती है. Financial fraud, yeah. फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होता. And it received the Best Presentation Award. It received, that research received the Best Presentation Award from the organizers of the conference. So उस वाले श्रृंखला में महाराज को बेस्ट प्रेजेंटेशन का पुरस्कार मिला. And it was published in the International Journal of Mechanical and Industrial Engineering. तो महाराज का जर्नल पब्लिश हुआ इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग. International Journal of Mechanical and Industrial Engineering. So, it's not in the journal of religion, it's not in the journal of philosophy. But then, the presentation, the research was done with scientific undertones, scientific communication. The title of the research is Sonic Therapeutic Intervention for Preventing Financial Fraud. But the content is all about how chanting helps to prevent financial fraud. उसमें बहुत साइंटिफिक तरीके से महाराज ने समझाया कि किस तरह से जप करने से फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं होता, रोक सकते हैं. So, the process of sadhana, and see, this is not strange for a devotee, because we never heard of Narada Muni getting involved in crime. भक्तों के लिए इतना मुश्किल नहीं समझना, क्योंकि हमने कभी नहीं सुना कि नारद मुनि कोई क्राइम कर रहे हैं. And then that research that I just presented at the University of Oxford, that was just last week also, that was on how chanting prevents leaders getting involved in sex scandals. तो महाराज कह रहे लास्ट वीक महाराज ने ऑक्सफोर्ड में एक प्रेजेंटेशन दी, और महाराज ने उसमें बताया कि किस तरह से हरे कृष्ण महामंत्र के जब से जो है जो लीडर्स हैं वो भी सेक्स स्कैंडल वगैरह से बच सकते हैं. And that is not also strange for the devotee, because we have Goswamis, people who have been celibate for years and years and years, and we never hear cases of sex scandals with Narada Muni and all of these other great sages. तो ये भी कोई बड़ी आश्चर्य की बात है भक्तों के लिए, क्योंकि हमारे गोस्वामी हैं जो कि नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, और हमने कभी ऐसा नहीं सुना कि कोई नारद मुनि इत्यादि जो बड़े वैष्णव है वो फंसे हुए इन चक्करों में. We see the life of Sukadeva Goswami, but the people, they don't know Sukadeva Goswami, they don't know Narada Muni, so you cannot be telling them history. तो लोग ना तो सुखदेव गोस्वामी को जानते हैं ना नारद मुनि को जानते हैं, तो उन नॉर्मल लोगों को हम ये हिस्ट्री तो नहीं दे सकते. Therefore, a scientific research presentation helps
to bridge the gap, helps to bring people who are not even religious minded to appreciate Krishna consciousness. क्योंकि वो ना हमारे पुराणों शास्त्रों को जानते हैं ना, ये एग्जाम्पल समझ पाएंगे, इसलिए ये साइंटिफिक तरह से प्रीचिंग करते हैं ताकि जो लोग नहीं जानते इन चीज़ों को, ये जो गैप है इसको हम ब्रिज कर सकें इस प्रचार से, साइंटिफिक प्रचार से. See, the approach to Krishna consciousness from religious perspective is meant for people who are very pious. तो हमारा जैसे भक्ति प्रचार कर रहे हैं वो उन लोगों के लिए जो कि बहुत पायस हैं, जो पुण्य वाले लोग हैं. For people who are very pious, you tell them anything about Krishna, they say, yes, tell me more. जो पुण्यवान है उनको आप बोलो कि आप भगवान के बारे में, तो बोलेंगे हाँ और बताइए हमको भगवान के बारे में. People who are not pious, they find different reasons to evade Krishna. और जो पुण्यवान नहीं है, आप उनको प्रचार करोगे वो अलग-अलग तरीके ढूंढेंगे भागने के वहाँ से. And you meet this type of people, and you can be frustrated with them if you don't have the other approach to helping people. अगर आप उस प्रकार के लोगों से अगर आप प्रचार करना चाहोगे तो आपको अलग तरीके से प्रचार करना पड़ेगा. And therefore, as you go on with your studies, you should see the need for you to balance your studies and your devotional values with this little short lifespan that we have. And one way to do that is to strategize how to use your 24 hours very nicely. तो हम जब अपने छात्र वाले अपने समय में हैं तो हमें क्या करना चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए साथ साथ और भक्ति के जो वैल्यूज है उनको भी लेके आना चाहिए अपने जीवन में और बैलेंस करना चाहिए इसको आगे चलते हैं, क्योंकि हमारा जीवन बहुत छोटा है और 24 घंटे में हमको जितना समय है उसमें बैलेंस करके चलना चाहिए. Because see, if you don't chant, you cannot go to college 4 years, 5 years degree program and come and clean. I guarantee you that. आज कह रहे हैं कि अगर आप जप नहीं कर रहे हैं और 4-5 साल तक आपने कॉलेज में पढ़ाई करी तो आप अच्छे चरित्र के साथ बाहर निकलोगे या नहीं निकलोगे, इसी पे गारंटी नहीं है. Because the environment on college campus is so immorally charged. तो अभी जो समाज में कॉलेज का जो स्पेशली जो वातावरण है वो इतना ज़्यादा चरित्रहीन हो गया है कि उसकी कोई कल्पना नहीं. So just by stepping your feet on the campus, those immoral energies impact on you. जैसे आप एंटर करते हैं कॉलेज में, आपने पैर ही रखा अपना कॉलेज के भूमि पे, तो वहाँ का जो वातावरण है वो आपको इम्पैक्ट करता है तुरंत, जो इमोरल वैल्यूज है वहाँ की. And so if you are not chanting, it's like somebody, a soldier who is going to the war front with swimming pants. तो ये ऐसा है कि अगर आप कोई सोल्जर लड़ाई करने जा रहे हैं और सिर्फ स्विमिंग के कपड़े पहन, स्विमिंग का कच्चा पहन के पहुंचिए इसी तरह अगर आप जब करके नहीं जाते हैं इस कॉलेज में. And the soldier tells his family, darling, see you tomorrow, okay, I'm coming back. सोल्जर वो स्विमिंग के शॉर्ट्स पहन के जा रहा है और कह रहा है कि डार्लिंग मैं कल आ जाऊंगा, देख आप मिलने दोबारा तुमसे, अभी मैं लड़ने गया हूँ. It's not bulletproof. How can you say that he's coming back? ये बुलेट प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ स्विमिंग ट्रंक्स पहन के गया है, तो वापस कैसे आ सकता है. So the sadhana is your bulletproof. तो साधना ही हमारा बुलेट प्रूफ जैकेट है. But if you like, you may choose to go to the war front with swimming pants, no problem. आपकी इच्छा है, आप स्विमिंग के पैंट में चले जाओ लड़ाई करने, आपकी इच्छा है. If there is some casualty, if you become in statistics, no one should be surprised that you become in statistics. और अगर मान लीजिए वहाँ पे आपके सही में गोली लग जाती है तो आप काउंटिंग का पार्ट हो जाओगे बस. Any comments or questions? Yes, please. जैसे कॉर्पोरेट लाइफ और जो प्रोविजन है सारे पॉजिटिव पॉइंट तो बता दिए, बट इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करें? मानी his question is that in corporate life whatever points you have mentioned is all good, but how do we practically implement that in corporate life? That's his question. Yeah, the same thing with the student. You effectively, it's called effective time management. See, to read that, you go to bed on time. You need some hours to rest this body. The best hours is between 10 p.m. and 12
midnight. If you rest for only those 2 hours, I repeat, if you rest for only those 2 hours, you have the strength to be alert and do your japa till you're tired. If you don't rest between 10 and 12, if even you sleep for 12 hours, it will be very difficult for you to regain your vitality to engage in your daily corporate affairs. महाराज कह रहे कि समय पे सोना बहुत ज़रूरी है. तो 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक का जो बीच का समय है वो बेस्ट समय है सोने का. आज कह रहे कि इतना भी है कि अगर आप 10 बजे सो के 12 बजे भी उठ जाओ, मतलब 2 घंटा भी सो, तो भी आपके पास इतनी शक्ति होगी कि आप अपना जब बिना टायर्ड हुए कर सकते हो. लेकिन महाराज कह रहे कि अगर आप 10 और 12 के बीच में नहीं सोते हो, बाद में सोते हो, तो उस समय पे अगर आप सो गए और आप 12 घंटे भी सो जाओ तो भी आपके पास शक्ति नहीं होगी कि आप अपने ऑफिस का काम कर पाओ. तो वो 10 से 12 के बीच में सोना बहुत आवश्यक है. Before I moved into the temple, I was in the corporate world. कह रहे जब मैं आया था भक्ति में आने से पहले मैं भी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में था. And I would chant 60 rounds before going to work. और मैं ऑफिस जाने से पहले 16 माला कंप्लीट कर लेता था. And when I come back from work, we work for like 8 hours. So when I come back from work, I lock myself up in my apartment. I was living by myself. I lock myself up in my apartment and again chant another 16 rounds before going to sleep. महाराज वापस आते थे तो महाराज अपने आप को अपार्टमेंट में लॉक करके दोबारा 16 माला करते थे सोने के. My friends were mainly lawyers and court prosecutors. They hated me because I cut off from the outings we used to go after work. महाराज जो मित्र थे वो लॉयर्स थे और कॉर्पोरेट में जो भी लीगल डीलिंग करने वाले थे, तो महाराज क्योंकि अपने आप को ऐसे लॉक करके रखते थे और उनसे थोड़ा कट गए थे, तो बड़ा महाराज से वो दूर रखने लगे वो भी. In economics, we have this concept of opportunity cost. इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. You have to see what do you prioritize. उसमें क्या प्रायोरिटी आपकी वो आपको डिसाइड करना है. What is going to help you build your career better? आपका करियर अच्छा कैसे बने वो आपको डिसीजन है. In most cases, people spend their work or their time, even their work time, engaging or browsing the internet. आज कह रहे हैं कि ऑफिस में भी जब काम करते हैं तो काम करने के बजाय एक इंटरनेट ब्राउजिंग में समय बर्बाद करते हैं लोग. I know people who lost their jobs because of internet. आज कह रहे हैं मैं कई लोगों को जानता हूँ जिनकी जॉब चली गई क्योंकि वो ब्राउजिंग करते थे ऑफिस में बैठ के. I know people who failed out from college because of internet. आज ऐसे भी लड़कों को जानते हैं जो कॉलेज में फेल हो गए, पास नहीं कर पाए क्योंकि वो इंटरनेट पे टाइम वेस्ट करते हैं. These days, we worship the smartphone. आजकल हम स्मार्टफोन की पूजा करते हैं. There's nothing wrong with the internet. इंटरनेट में कोई गलती नहीं है. How we use it हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं is a problem. वो प्रॉब्लम. Just like there's nothing wrong with a knife. ऐसे चाकू में कोई गलती नहीं है. We use a knife to help ourselves in the kitchen. उससे हम चाकू से किचन में इस्तेमाल कर सकते हैं. There's nothing wrong with the blade. We use a blade to have a clean shave. और ब्लेड में भी कोई कमी नहीं है, उससे हम शेव कर सकते हैं. But the same knife can be used for robbery. पर उस चाकू से हम डकैती भी डाल सकते हैं. There's a blade that we can use for shaving, having a clean shave. If we are inattentive, it could end up in injuries that will lead to hospitalization. तो ब्लेड भी ध्यान से यूज नहीं करेंगे वो तो क्लीन शेव कर सकता है. अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो बहुत बड़ी चोट लग सकती है कि हमको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ जाए. So, inattention to our needs is one of the major problems. Addiction to the smartphone is another major problem. Not understanding how to prioritize what we need to do to help in enhancing our work values. That's another problem. And then the last one is our spiritual values. We don't know that these are the foundations. Our spiritual values are the foundations of our social, economic, political, commercial growth.
आपने 4 पॉइंट्स बताए इनअटेंटिवनेस टू आवर नीड्स, हमारी क्या आवश्यकता है उस पे हम समझ नहीं पा रहे ढंग से, पहला। और दूसरा व्हाट वाज सेकंड वन महाराज? द फर्स्ट वन इज इनअटेंटिवनेस टू योर नीड्स। I don't remember. द सेकंड, महाराज ने 3 पॉइंट बताया कि उसमें मेनली है कि आप पहला तो इनअटेंटिवनेस टू योर नीड्स, सेकंड इज फॉर चैंटिंग बताया महाराज ने। Okay, so the important point here is that we have to see how we have to understand that the devotional, we tend to underestimate devotional values. हम भक्ति के जो गुण हैं उनको बहुत छोटा समझने का प्रयास करते हैं, अंडरएस्टिमेट करते हैं। But the devotional values are the pivots of our material success. अब मटेरियल Success. सक्सेस, तो महाराज कह रहे हैं कि हम उसको छोटा समझते हैं, लेकिन हमारे भौतिक जीवन में भी जो सक्सेस का मेन जो केंद्र है वो हमारी भक्ति की वैल्यूज ही हैं। Devotional bankruptcy is the main cause of the problems in the world. भक्ति की दरिद्रता एक समाज के जितने भी प्रॉब्लम का मेन कारण है। So, corporate, student life, whatever, it's all about how you utilize your 24 hours effectively. चाहे कॉर्पोरेट लाइफ हो, स्टूडेंट लाइफ हो, आप किस तरह से अपने 24 घंटे का इस्तेमाल कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। Have a schedule and try to follow that schedule, and especially you may have a schedule, but if you are not devotionally astute, even the schedule you may not follow. तो आप अपना स्केड्यूल बनाइए और उसको फॉलो करिए, लेकिन अगर आप में फिर भी भक्ति की वैल्यूज नहीं है तो वो नहीं होगा। If we don't follow this, if we don't have spiritual values, we will not be able to follow this schedule. अगर आपके स्पिरिचुअल वैल्यूज नहीं है तो आप अपने स्केड्यूल भी फॉलो नहीं कर पाओगे। Even all these time management gurus, they will talk back and forth, but then at the end they say, but if you are not spiritually inclined, all this time management becomes valueless because you will not be able to follow your schedule. तो कई टाइम मैनेजमेंट गुरु हैं जो तरीके बताते हैं कैसे टाइम मैनेज करें, लेकिन अगर आप में भक्ति की वैल्यूज नहीं है तो एट द एंड आप वो टाइम मैनेजमेंट खुद ही स्केड्यूल ही फॉलो नहीं कर पाओगे, अपना सारा सब वेस्ट हो गया। Because according to the Bhagavatam, Adanta go befisha tam tamishram, uncontrolled mind, uncontrolled sensory modalities. This is the foundation of the challenges of society. तो शास्त्र के भागवतम के अनुसार जो अनकंट्रोल्ड माइंड है हमारा, वही सारी समस्या का जड़ है। Now, we may say, oh, this is a belief system. But no, it's not a belief system. This is supported by the general theory of crime in criminology. हम कहते हैं कि ये तो एक बिलीफ सिस्टम है, लेकिन ये एक और सोसाइटी द्वारा प्रमाणित है, जर्नल्स In criminology, general theory of crime in criminology. जर्नल थ्योरी ऑफ क्राइम एंड क्रिमिनोलॉजी द्वारा प्रमाणित है। General theory of crime stipulates that it was propounded by two criminologists, Gottfriedson and Hischi, in 1990. They developed this general theory of crime, which stipulates that all crimes and antisocial behavior are due to low self-control. Adanta Gopi Vishatam. तो जितने भी तरह के क्राइम हैं समाज में, इन सब का मेन कारण बताया है कि सेल्फ कंट्रोल की कमी। So, you see, what is there in your own literature, in your own tradition, is now being put in the Western culture in a polished way. But the foundation is the same language, the same thing. Okay? तो उनके पास हमारे शास्त्रों का आधार नहीं है, लेकिन फिर भी आप सिमिलैरिटी देख सकते हो कि उनके जर्नल्स इत्यादि में जो हमारे शास्त्रों के अनुसार जो कैरेक्टर बिल्डिंग इत्यादि जो है एग्जांपल तो कॉमन है। So use your time wisely, and your corporate life will be grounded in devotional culture. अपना समय अच्छे से यूज करें और आपका जो कॉर्पोरेट लाइफ है उसको भी भक्ति के वैल्यूज के साथ आपको And you will be very happy. और आप बहुत खुश हो जाओगे। And your colleagues in the office may ask you, did you take some wine today? You look so happy. Yeah, because they expect that you should be stretched
stretched out. And but because the devotional sadhana, especially the chanting, helps to mitigate stress, you live your life very vibrantly, you are happy doing your job in the office, and people wonder. We all are very stressed out, and he's so vibrant, जो भक्ति के पालन कर रहा है, साधना भक्ति में लगा हुआ है, वो ऑफिस में भी बड़े प्रसन्नता से रहता है, तो लोग देखते हैं कि ये ऐसा क्या हो गया इसके साथ कि इस तरह से अच्छे से जी पा रहा है, हम नहीं कर पा रहे. Does it make some sense to you now? Does it make some sense to you? All right. And any other questions? Yes. Just want to know your mindset when you write papers about how Hare Krishna Mahamantra affect your mental health. How come crime reduce from this Mahamantra? What is your subject? How you analyze these things? Yeah. For instance, the research that I conducted on how chanting prevents financial fraud, it was a qualitative research using hermeneutic phenomenological design. Hermeneutic phenomenological design basically implies the analysis of lived experiences. Now, in that research, the results were that some themes that cropped up in the result, or that were generated in the result, for instance, were post-conventional consciousness, high self-control, pro-spiritual values, and all of these themes are enablers of anti-criminology. So there is team which categorize with these features, and you analyze these things. When you what's your level of education? Bachelor's. You cannot understand this right now. It's difficult for you to understand what I'm talking about, because the focus of this presentation is to professors. For instance, when I use the word phenomenology, what does it mean to you? When I talk about hermeneutic phenomenology, what does it mean to you? It's not. You may read even that research paper, and you may not understand the stuff there, because the target audience is not for bachelors. The target audience of that publication is for professors, PhDs. तो ये कह रहे महाराज कह रहे कि इनका जो प्रश्न था, तो प्रश्न ठीक था, पर कह रहे महाराज कह रहे कि जो उत्तर है इसका वो प्रोफेसर के लिए है, और पीएचडी जिन्होंने किया है वही समझ पाएंगे, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी जो भी वर्ड्स यूज किए हैं उसके अंदर, वो आप कोई बैचलर की डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री से भी आप नहीं समझ पाओगे. उसके लिए आपको पीएचडी की डिग्री होनी पड़ेगी, क्योंकि वो उन्हीं के स्तर पे वो प्रचार किया गया है. Yeah, it's here. Go and test on the kitchen. Shall we close here? Shall we close now? We have time, more time. So I remember in London there was one of these devotees. So I sent the certificate of the presentation at Oxford. She's a lady. So I sent it to her, and then she said, she's a graduate. She said, what does it mean? लंदन में ग्रेजुएट है, उनको पेपर दिखाए तो वो कहती है क्या है, मैं समझ नहीं पा रही. Then I have to explain that, this is basically a research that we conducted utilizing the Hare Krishna Mahamantra in addressing issues of leadership involvement in illicit sexual adventures. महाराज कह रहे हैं कि ये जो रिसर्च पेपर है हमारा समझा रहे उसको कि ये इसमें ये दिखाया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र से किस प्रकार जो लीडर्स हैं वो चरित्रहीनता के जो उन पे आरोप लगते हैं उसको कैसे बचा जा सकता है. I remember the other time when I was in Calcutta when I was in Mayapur for my sannyas initiation, and I was also to present I was to go to present at 5 different conferences in India within 2 months. So I went to Calcutta to make a presentation. So then I came back, one brahmachari, he asked me, Vasudeva, we're not seeing you for some time. I said, I went for the conference.
We said, oh, really? So what is it that you presented? So I gave the theme of the presentation. And he said, what does it mean? महाराज कहते हैं सन्यासी से पहले महाराज ने कुछ ही महीनों में 5 प्रेजेंटेशन कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंटेशन दिए। तो महाराज की जो सन्यासी से पहले जो महाराज के साथ ब्रह्मचारी थे वो महाराज से पूछे कि इसका क्या मतलब है, तो उनको समझ में नहीं आया। महाराज ने पेपर दिखाया। Conference presentations are men, the target audience are professors. तो टारगेट जो ऑडियंस है वो प्रोफेसर है रिसर्च पेपर्स के। So when we talk about publications in peer-reviewed journals, they are not meant for the general mass of people. तो जो रिसर्च पेपर थे जर्नल्स है वो नॉर्मल साधारण पब्लिक के लिए नहीं है। But our devotees should be proud of what some of these devoted scientists are doing, because you may not see them in our temples coming to Mangarati, or you may not see them, they may not be your GBC, they may not be your temple president, they may not be whatever your management position in your temple, but they are preaching to a high caliber of people. तो जो इस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं उन प्रचारकों से हमें बहुत गर्व महसूस होना चाहिए हमारी संस्था में, क्योंकि वो बहुत बड़ी पोस्ट पे नहीं है, ना जीबीसी है ना मैनेजमेंट में है, लेकिन वो बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को, बड़े बड़े लोगों को प्रचार कर रहे हैं अपनी साइंटिफिक प्रीचिंग के थ्रू। तो हमें बहुत गर्व होना चाहिए इस बात पे। So when we meet people, we should be careful how we relate with them, because the tendency is to think someone is not a shaved head, so we are superior to them because they are not shaved head. तो हमको बहुत सावधान रहना चाहिए कि कोई व्यक्ति आ रहा है और हम देखें कि भाई इसने तो हेड शेव नहीं किया है तो ये इतना एडवांस नहीं है। There are people out there, devotees preaching far, far higher, greater than the people who have shaved heads. तो जो साइंटिफिक प्रचार कर रहे हैं, जो सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन बाहर बैकग्राउंड में प्रचार कर रहे हैं, तो जो तिलक लगा के हेड शेव करके घूम रहे हैं उनसे भी कई गुना एडवांस्ड है वो प्रचार में लगे हैं। In most cases, the devotees who have shaved head, they preach religion, preach philosophy to people. और जो शेव्ड हेड है, जो नॉर्मल मंदिर में जो प्रचार कर रहे हैं, वो फिलॉसफी का प्रचार कर रहे हैं, सिद्धांत दे रहे हैं लोगों को। But some of these scientists, I know some of these Indian guys who are scientists who are using their skills to preach, and you don't even know them. महाराज कह रहे ऐसे कई भारतीय साइंटिस्ट हैं जो प्रचारक हैं, भक्त हैं, तो आप उनको जानते भी नहीं हो, बहुत अच्छा प्रचार कर रहे हैं अपने फील्ड में। I remember also when I met one of these young devotees in India, he has over 25 books. So he interviewed me on his podcast, and he said that it's amazing that you have your PhD in management science and you're able to transplant Krishna consciousness into the management domain. How amazing it is. But he said, well, you are doing this type of wonderful work, but people don't know you in ISKCON. You asked him? No, he told me that you are doing this type of wonderful service, but people don't know you in ISKCON. तो महाराज एक ऐसे भारतीय प्रचारक भक्त से मिले जिन्होंने 25 किताबें लिखी है, साइंटिफिक किताबें लिखी हैं। तो उन्होंने एक पॉडकास्ट में महाराज को इनवाइट किया और उस पॉडकास्ट में महाराज से कहा कि आपने जो कार्य किया है इसको लोग जानते नहीं कि आप क्या प्रचार कर रहे हो, उन्होंने समझते हो। So I told him that my services are to please my spiritual master and to please Prabhupada, and majority of ISKCON devotees can't even understand this service that I do. महाराज कह रहे कि महाराज की जो सेवा है वो अपने गुरु महाराज को प्रसन्न करना, श्री प्रभुपाद को प्रसन्न करना है, लेकिन कई लोग जो है वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि महाराज ISKCON में। Now, for instance, these devotees, these Indian scholars who developed this research project that was published last year on insomnia, did you see it on Dharnavat? No, you didn't see it on ISKCON World. You don't see it. They don't make the propaganda. तो महाराज ने जो लास्ट ईयर जो इंसोम्निया के ऊपर जो रिसर्च किया, प्रचार जो महाराज ने रिसर्च किया, तो उसका ना तो आपको ISKCON वर्ल्ड वेबसाइट पे मिलेगा, ना डेटा वर्ल्ड, कहीं पे आपको उसका आपको मिलेगा नहीं कि कहाँ पे वो प्रचार जो महाराज ने जो सेवा की। Because their target audience are professors, and the general mass of devotees may not even understand what they're saying. क्योंकि उसको आम आदमी समझ ही नहीं पाएंगे, तो उनको प्रेजेंट भी किया जाए तो कोई लाभ नहीं होगा। All right, I think we end here, and if you have further queries or questions, you can
What's up, me? Yes, okay. Maharaji, you said that we must have spiritual foundation in our life. So, as if I take my example, I am a student, and if I, in a particular time, I'm studying my subject, how can I engage that time towards Krishna? How can I focus to Krishna because I'm studying that time? So, how can I engage that? Yeah, you are studying that time. You do your studies, but understand that Krishna is the progress in you. Krishna is intelligence in you. Krishna is in power in you. So whatever even you are able to accumulate in your brain is due to Krishna's mercy. भगवान कह रहे हैं आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ने की जो शक्ति है वो आपको भगवान दे रहे हैं, तो भगवान के कारण ही आप समझ रहे हो, तो आपको इस विचार से अपना पढ़ाई करनी चाहिए. And it doesn't mean that you don't have to do your studies. You do your studies, but also do sadhana. Do chanting. Especially, I got a report from one of my friends, a doctor in the US. So because I met this guy, he's an Indian boy. So he did his MBBS here in India, then he got a scholarship to do his MD in America. So I met him several years ago, like over 12 years ago, okay? So, we miss each other, especially when I stopped using Facebook frequently for very many years. So, like, I cut off my relationship with so many devotees. So I saw him recently, and incidentally, he's still very much behind in chanting. So I'm now trying to encourage him to how to utilize his day and time to be able to put devotional aspect into his life. So it's not that you have to stop one thing, but you do the two things. In the Upanishad, it is mentioned that we have to cultivate science, in other words, professional values, professional development, and science, devotional culture, and nations, professional values, on two rails. The two rails have to be parallel. They go side by side, so that you have sustained values, you have sustained success. महाराज कह रहे हैं जैसे ट्रेन दो पटरी पे चलती है, तो एक पटरी आपका भक्ति के वैल्यूज हैं और दूसरे आपका जो स्टडीज हैं या जो भी काम आप कर रहे हो, कॉर्पोरेट जो भी लाइफ है आपकी, तो ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए आपकी, तब वो हेल्थी लाइफ होगी. और महाराज एग्जांपल दे रहे कि महाराज 12 साल पहले कनेक्शन में थे एक इंडियन भक्त के साथ जो डॉक्टर था, तो उसने यहाँ पे MBBS की, फिर वहाँ से अमेरिका जाके MD की. तो महाराज फेसबुक पे थे कई समय तक, लेकिन फेसबुक से महाराज हट गए, तो अब क्या कनेक्शन कट गया. तो महाराज अभी उनसे मिले तो महाराज ने देखा कि वो चैंटिंग में बहुत पीछे है. तो महाराज अभी उनको एनकरेज कर रहे हैं कि अपने दिन का दिनचर्या मतलब किस तरह से बनाए कि वो भक्ति में आगे बढ़ पाए. तो महाराज उनको एनकरेज कर रहे हैं. तो यही बोल रहे हैं कि दोनों चीज़ें साथ साथ हमको फोकस रखना चाहिए, पढ़ाई पे भी और चैंटिंग में भी. So, idea of doing your studies is very important, and putting Krishna at the center of your studies is what is going to help you to sustain your academic success. आज कह रहे हैं कि पढ़ाई तो अच्छी चीज़ है, लेकिन भगवान को भी श्री कृष्ण को सेंटर में रखना है, तो इससे हम सस्टेन कर पाएंगे आगे. So you do your japa early in the morning, so that is like taking eating before going to job. You need to eat before you go to work. The japa is the staple food. जैसे आप ऑफिस जाने से पहले खा के जाते हो ना, खाली पेट नहीं जाते, वैसे आपको सुबह उठ के जप करना चाहिए, वही आपका वास्तविक आहार है. When you do your japa, you feel nourished, and your day's study is done without pain. जब आप जप करते हो सुबह उठ के, तो आप बिना तकलीफ के आप स्टडीज कर सकते हो आगे पूरे दिन. But if you feel that you don't need japa, good for you. But understand the problems you're going to have on college campus. I don't know what is the situation in India, but practically all over the world is the same thing. There is free sex on college campus, free intoxication on college campus,
free, so many social infrastructures on college campus. And so, if you're not engaging in sadhana, it means that you are opening up your doors to all of these infrastructures, and they will embrace you, for sure. I guarantee you. महाराज कह रहे कि अगर आप जब नहीं करते हो तो आप जैसे कॉलेज एंटर करते हो, खासकर पाश्चात्य देश में ऐसा है, महाराज कह रहे भारत में भी शायद ऐसा ही होगा कि वहाँ पे आपको फ्री सेक्स मिलेगा और हर तरह की जो गंदे कार्य हैं उन सब के फ्री आपको मिलेगा करने के लिए। तो आप अगर जब करके नहीं जा रहे तो ये सारी चीज़ों को आप खुले हाथों से बुला रहे हो अपने पास। So, it's about how to utilize your life genuinely, authentically, for the purpose of bringing good results to yourself, for your future, your devotion, and your profession, and to be able to create a reputation for your family, for your society, and for ISKCON. तो ये जो हम डिवोशनल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, इससे आपको पर्सनल लेवल पे भी आपको लाभ होगा, सोसाइटी को, आपके पेरेंट्स को भी, और आगे चल के समाज को भी इससे लाभ मिलेगा। I remember in Chicago, there was this Indian boy. He was doing his PhD in some science field. And so I went to Chicago. And I think some devotees have preached to him that he doesn't need the PhD. He should just be a devotee. So he had decided to wrap up. Okay? And he had to stop his studies. So he had met me. Then I asked him a simple question. What are the expectations of your parents who sent you, spend so much money to send you to America to do these studies? What are their expectations from you? महाराज कहते हैं कि महाराज कुछ समय पहले शिकागो पे एक इंडियन स्टूडेंट भक्त से मिले, तो वो भक्त को और भक्तों ने प्रचार करके बोला कि तुम पीएचडी क्यों कर रहे हो, छोड़ो भक्ति करो। और तो फिर वो डाउट में आ गया, तो महाराज मिले उनसे, तो महाराज ने उनको पूछा कि तुमको ये जो धन दिया, पढ़ाया, तुम्हारे माता पिता पढ़ा रहे, तो उनके मन में क्या है तुम्हारे लिए, वो तुम सोचो, उनका गोल क्या है। तो फिर महाराज ने उनको समझाया। So I advised him that, yeah, I understand his situation, environmental forces on him to stop his studies, but it's going to bring a bad reputation to ISKCON because your parents will be making the propaganda that will be calling ISKCON's name, that ISKCON destroy their child. महाराज कह रहे हैं कि इससे तो जो तुम अगर ऐसे पढ़ाई छोड़ दोगे तो इससे ISKCON को बुरा नाम आएगा कि लोग बोलेंगे कि ISKCON के कारण देखो इसने पढ़ाई छोड़ दी। So I said, instead, satisfy your parents, finish your degree program, and then you want to join full time. Good. Your parents, they'll be proud of you that we have a son, he's a doctor. But then you are doing your own stuff as an independent person. You have satisfied them, you have satisfied yourself, and the both parties are in good terms. महाराज कह रहे हैं उससे अच्छा तो पीएचडी अपनी कंप्लीट करो, डॉक्टर बन जाओ, और फिर तुम्हारे पेरेंट्स भी पसंद होंगे कि हाँ भाई इसने पीएचडी कर ली है, एंड देन उसके बाद तुमको फुल टाइम बनना है, जो डिसीजन लेना है, देन इट इज अप टू यू। So we also advise our young devotees doing studies. You are doing a bachelor's. Yeah, it's a good thing if you plan to join the temple when you finish. But try to see that you graduate. आज कह रहे हैं कि जो फुल टाइम बनना भी चाह रहे हैं, तो अगर वो पढ़ाई करें बैचलर्स के बीच में, तो उनको प्रयास करना चाहिए अपना बैचलर्स पूरा करना चाहिए। And this is the general advice we give to the temple managers, especially each country I go to. I advise the managers to make sure that they encourage the students to finish their programs, so that the parents don't bring, don't make a bad proclamation about our movement, that the movement spoiled your kids or whatever. तो महाराज कई बार जब प्रचार करते हैं तो मैनेजमेंट, टेंपल मैनेजमेंट को भी प्रचार करते हैं, महाराज उनको समझाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति फुल टाइम बनना चाह रहा है और वो पढ़ाई कर रहा है, तो उसको एनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी ग्रेजुएशन जो है कंप्लीट करे और उसके बाद वो फुल टाइम ज्वाइन करे, नहीं तो पेरेंट्स जो है वो ISKCON का नाम खराब कर सकते हैं। Because even in India, a number of people in India, you can investigate and you get this verification. A number of people in India, in the beginning, they perceive or they observe the Hare Krishnas as people who are there to spoil their children. तो भारत में महाराज कह रहे हैं कि ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है कि लोगों को, पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि ISKCON वाले हमारे बेटे को बर्बादी कर देंगे। And they don't know that when the kids join
the temple and become full-time devotees, 10 generations of their families before them and after them they benefit. पर उनको ये समझ में नहीं आता कि जो उनका भक्त जो है बेटा जो भक्त बन जाएगा तो आगे के 10 जन्म और पीछे के 10 जन्म तार देगा. Therefore, to satisfy, to give them a sense of placation, we should encourage our young devotees to finish their graduate from the bachelor's before they join. तो इन बातों को देखते हुए करना चाहिए मैनेजमेंट को कि जो भक्त फुल टाइम बनना चाह रहे हैं उनको एटलीस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेनी चाहिए. In that way, the parents don't get too mad. तो इस प्रकार जो है वो माता पिता बहुत ज़्यादा क्रोधित ना हो जाए. All right? Does it make sense to you? All right, Ajit, can we close here? Yeah. So we would like to thank Maharaj for a wonderful class and inspiring and adding values in our lives, in our studies and everything. We would chant once. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And still more is coming today. Maharaj is speaking in the evening here about the special pastimes of Lord Ramchandra. राम लीला पे भगवान कथा करेंगे शाम को 7 बजे. तो आप लोग जो स्टे बैक कर सकते हैं, यू कैन स्टे ट्यून. आप क्लास अटेंड करिए और महाराज विल स्पीक ऑन लॉर्ड रामचंद्र. इस वजह भक्ति वासुदेव स्वामी महाराज की जय, की जय, निताई गौर सुंदर भगवान की जय. और कृष्णा गोविंद का भी धन्यवाद करेंगे. उन्होंने बहुत ही सुंदर हिंदी अनुवाद किया. वेरी नाइस ट्रांसलेशन. इनके लिए भी मामा बोलेंगे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे.